गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू डे 2। फर्स्ट रात कुछ ऐसी गई, एक दो और इसके अंदर और 2 लेयर डाल के ग्लव्स और सॉक्स भी। सपोजिटली द टेम्परेचर वाज -1 एंड बहुत मज़ा आ रही है। अभी रेडी होके मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा। चलो अभी थोड़े बहुत रेडी हो गए। विल गो डाउन एंड हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट एंड देन लीव। लेट्स ट्राई यहाँ का लोकल फ्रूट जिसे कहते हैं जापानी फ्रूट। इट्स लाइक पपाया एंड पीच मिक्स कसा। पीच विदाउट द फाइबर। फ्रूट्स डन, अभी प्रॉपर ब्रेकफास्ट। तो अभी फाइनली पूरा रेडी होके हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड्स रोहतंग पास। द टाइम इज 9:30 राइट नाउ एंड वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू लीव। आइडियली अगर आप 8:30 से भी ज़्यादा जल्दी 8:38 को भी निकलो तो इट इज़ बेटर। पास पे जाने से पहले यू हैव टू रेंट दीज आउटफिट्स फ्रॉम दीज लोकल शॉप्स ओवर हियर, बिकॉज पास पे कैसा होता है, यू डोंट नो व्हेन द वेदर वुड चेंज ओवर देयर, सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। As said in my previous vlog, all the details about taxi charges, permits, extra clothes और जो कुछ भी छोटे बड़े खर्चे हैं वो सब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, so please check the description out after this video. The distance from Manali to Rohtang Pass is about 38 kilometers and it takes about 1 hour 15 minutes. But I would recommend you that you do the complete circle rather than just doing Rohtang Pass itself. What circle? Wait, let me explain it to you. सुबह जब आप मनाली से स्टार्ट करोगे, go directly to Rohtang Pass. After reaching Rohtang Pass, from there you have to go to Atal Tunnel through Koksar village. While on this path, you can also check out some other places, namely cabbage plantations, Chenab River, etc. And as you reach the Atal Tunnel, you can go through the Atal Tunnel and after that go straight to Solang Valley for some activities. And then return to Manali through Palchan. This whole trip would complete your circle, which I was talking about earlier. And approximately the distance covered would be about 100 kilometers. And it shall take you anywhere from about 3 hours to a whole day, depending on how many breaks you take, how many activities you do, etc. But you will cover most of the tourist attractions in this side of Manali in one day. और एक यहाँ पे important thing जो आपको याद रखनी है, that is to remove the permits. So Rohtang Pass जाने के लिए we have to take permits or passes. A special permit for diesel and petrol vehicles by the designated authorities at Manali is required to visit the Rohtang Pass for tourism purposes. 400 diesel and 800 petrol vehicles are given permit per day. This information is according to their website. I'll link the website and any related necessary information about this permit and passes. You can check that out later after watching this video. In our case, the passes were already taken by the taxi driver itself, so we didn't have to apply anywhere else. मनाली विलेज का लास्ट गांव है, जगह का नाम है कोठी। इसके आगे अदर डिस्ट्रिक्ट आती है, लाहौल स्पीति। अच्छा, वाला रोड दिख रहा है ना, ऊपर गाड़ी चल रही दिखेगी आपको, शीशे चपकेगी ऊपर, वो देखो चमका ना। उधर जा रहे हैं हम लोग। हाँ, उस बात। इधर सिर्फ परमिट चेकिंग करते हैं कि परमिट मिल भी जाता है? परमिट चेकिंग। हाँ था। सो अभी हमारा टिकट चेकिंग हो चुका है एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस व्यू। So what is so special about Rohtang Pass? Let's know more about it. Known for its scenic beauty, Rohtang Pass holds strategic importance for India. The pass offers beautiful sights of glaciers, peaks, Lahaul Valley and the Chandra River. While going to the passes, you can also get a view of the Chenab River and the Bass River. Similarly, there are many more beautiful spots and places on this route to, wait, admire, click pictures and create memories. ब्यास रिवर
So if you have not done this pass before, or if you have not done this road before, I highly recommend you to do so. For someone who is new to driving, these roads might seem a bit scary, but if you are cautious and within the controlled speed limits, you will get through it easily. As you can see, even on a weekday, the roads are quite busy. With every turn you take, there is something new to admire, a new frame to capture. Soon enough, the small roads will open up to a proper 2-lane road. This viewpoint would mark your last point for cafes and stores before reaching Rohtang Pass. Now we are officially less than 20 kilometers from Rohtang Pass, and it's very evident looking at these mountains. As you climb up, you start getting closer to the snow-capped mountains, and the change in the weather outside is very evident. अभी हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए हैं एंड यहाँ पे ये बर्फ़ जमती है, अभी तो बहुत ही कम है, लेकिन ये पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा हो रही है। प्लस यहाँ पे ये भी है वाटरफॉल जैसा। गोवा में हम तो बहुत वाटरफॉल पे जाते हैं, बट लेट्स सी ये पानी कितना ठंडा है। ओह माय गॉड। अब ये छोटा सा स्टॉप लेने के बाद जा रहे हैं हम, दीदी वहाँ पे रुकी है हमारे लिए, तो जाएंगे अगले स्टॉप पे। यहाँ पे है ब्यास नदी का स्टार्टिंग पॉइंट। तो कुछ हम ऐसे अभी चल के जा रहे हैं टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यास लेक। बहुत ही नज़दीक है, दैट्स द मेन रोड एक्चुअली, सो इट्स वेरी क्लोज बाय। As it can be seen, the river Byas rises at Himachal Pradesh and flows for some 470 kilometers. This water is also believed to have medicinal properties. चलो जो भी हो गया ये point, चलते हैं next point पे। So after this point, in no time you will reach at Rohtang Pass. So इधर से घोड़े मिलते हैं। हाँ, घोड़े माउंटेन बाइक। अच्छा, यहाँ पे रोहतंग पास पे there are horses which will take you to the snow point and you can play there, click pictures, whatever, and come back to this point. There are also those ATV motorcycles which can take you to the snow point and get you back. I think it approximately takes about 2 hours for the whole journey. Rohtang Pass 13,000 फीट पे है। रोहतंग पास का हमारा व्यू पॉइंट, यहाँ पे आपको खाने के लिए भुट्टे, ऑमलेट, मैगी और ऑब्वियसली ये बोर्ड भी है यहाँ पे जो आपको मिलेगा, एंड मोर थिंग्स टू डू। यहाँ पे आपको हॉर्स या फिर वो ATVs है ना, ये वाले, ये आपको लेके 1 घंटे की राइड रहती है, टिल टेक यू टू द स्नो पॉइंट्स। ओके, सो मिलते हैं अभी कार में। वो राइड्स आपको लेने हैं या नहीं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आवर ड्राइवर हैज टोल्ड अस दैट आगे भी हमें थोड़ा बहुत स्नो मिल सकता है, सो वी आर गोना प्लेस आवर बेट्स ऑन आवर ड्राइवर टू वॉच द स्नो अ लिटिल बिट क्लोजर। So with the pass done, we are now heading out, but before that, just have a look at this unreal sight. So we didn't do the normal, ride towards the snow, but Didi was very nice. She stopped us over here, जो यहाँ पे हम लोग चल के आए, and then just, played in the snow and whatnot. It's beautiful, really very nice. I want to catch a snowball, wait.
आई वोंट मेक अ स्नोबॉल बिकॉज मैंने ग्लव्स अब तक नहीं डाले हैं बिकॉज आई वांट टू यूज़ द कैमरा. देखो क्या क्या नहीं करता आप लोगों के लिए. सो आई यूज़ वन ऑफ दीज. ओ माई गॉड. सो या आई वाज सेइंग ग्लव्स नहीं डाले क्योंकि ग्लव्स में मुझे फ़ोन यूज़ करने को नहीं मिलता है क्योंकि स्क्रीन सेंसिटिव नहीं है फॉर ग्लव्स. बट एनीवेज दिस सीम्स नाइस. हाँ, लेट्स मूव ऑन टू सम 360 शॉट्स. सेल्फी. यहाँ पे ये रिकॉर्ड करते हुए मैं गिर गया तो बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा. ओह माय गॉड. ओह बचा, नहीं गिरा. बचा बचा. मुझे छोड़ो, इस व्यू को एंजॉय करो. Just a small message while visiting this place: be respectful to the mountains. The mountains let you pass. You don't conquer them. Always remember that. And as I always say, be sure to bring back the trash which you take there along with the beautiful memories from the place. Keep it clean. And most important, photos and videos के चक्कर में don't do something reckless or foolish. तो अभी हो गए 360 से भी शॉट्स and इस प्लेस के भी शॉट्स थोड़े बहुत GoPro से iPhone से. चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे. So I hope you all enjoyed this little experience of Rohtang Pass. Now we are heading towards Atal Tunnel. The road towards Atal Tunnel from here, as you can see, it's amazing. और यहाँ के जो आपको नज़ारे दिखेंगे of the mountains, river flowing, bridge crossing, like it is next level. One more thing, if you are someone who enjoys hairpin turns, you will definitely love this road. रोहतंग पास से अटल टनल जाने के लिए it is about 35 kilometers and it takes 1 hour to cover this distance. While heading towards Atal Tunnel from Rohtang Pass, you will also get a view of the Chenab River and will also get a chance to cross over it. Before we go any further, अब तक वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हाउ यू आर फाइंडिंग दिस मनाली सीरीज. आई वुड लव टू रीड योर थॉट्स. So now Koksar is the next village which you will get while heading towards Atal Tunnel. You can stop here for snacks, lunch and other facilities as well. ब्यास थी पीछे वाली और ये चंद्रा रिवर है. आगे जैसे भागा आएगी और चंद्रा भागा मिलके चिनाब बनेगी. जो चिनाब बनती है वो पाकिस्तान जाती है. अच्छा. Right now, as you can see, we are crossing the Chenab River. Just look at this place, man. Feels unreal. The river flowing down with clean blue water and these huge mountains with some of them covered in snow and these open wide roads. It feels like a dream. हम लोग अभी एक small break ले रहे हैं in this cafe for some light snacks. While in this village, you can also check out their famous cabbage farming. In this area, there are quite a few cafes, restaurants, hotels, and even some homestays. So if you're interested in staying near the Atal Tunnel, you can check out this place for accommodations. And here we are at Atal Tunnel. ये जो right में रास्ता गया है, that goes to Sisu, and then this same road can be taken to go to Leh. Inaugurated on 3rd October 2020, it took 7 years to build this tunnel. Atal Tunnel, named after the former Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee ji. तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉप अटल टनल. It is a highway tunnel built under the Rohtang Pass in the eastern range of the Himalayas on the Leh-Manali highway in Himachal Pradesh.
It's not only important from a strategic point of view, but also gives a boost to tourism, hence creating employment opportunities. The tunnel provides all-weather connectivity to remote border areas of Himachal Pradesh and Ladakh, which otherwise remain cut off from the rest of the country for about 6 months during winters. Atal Tunnel has officially been certified by the World Book of Records as the world's longest highway tunnel above 10,000 feet. The total length of this tunnel is 9.02 kilometers. Inside the tunnel there is telephone facility every 150 meters, fire hydrant every 60 meters, emergency exits every 500 meters, air quality monitoring on every 1 kilometer, broadcasting system and automatic incident detection system with CCTV cameras on every 250 meters. The decision to construct the strategic tunnel below the Rohtang Pass was taken on 3rd June in the year 2000, when Vajpayee ji was the Prime Minister. The total cost of this entire project is 3,200 crores. As you cross the tunnel, you would be greeted with a view like this. So after crossing the Atal Tunnel, it was time for us to head towards Solang Valley. The distance from Atal Tunnel to Solang Valley is about 15 to 16 kilometers and it takes about 30 minutes to reach there. The roads are beautiful and are covered with amazing sceneries all around. Solang Valley is also known as the Snow Valley, which is famous among tourists for its adventure activities hosted there. Some of the adventure sports are like skiing, trekking, mountaineering and also paragliding. There is no entry fee for Solang Valley except for the cost of adventure activities. Sorry for the abrupt cut. हम आ गए अपने रूम वापस अपने होटल हाईलैंड पे एंड ये अब्रप्ट कट क्यों, क्योंकि जो हमारे एक मेंबर था उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो गया थोड़ा सा. सो वी रश्ड बैक होम, आई मीन टू आवर होटल. और उसके बाद मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, सिर दर्द करने लगा. सो ज़्यादा कुछ किया नहीं हम लोग ने, वी रीच बैक क्वाइट अर्ली. देखेंगे अभी भी 2 दिन है हमारे पास. इफ़ वी गो बैक आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड एंड शो यू ऑल द सोलंग वैली. वहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत है आप जो कर सकते हो. एनीवेज़, अगर आपको रोहतांग पास, अटल टनल और काइंड ऑफ सोलंग वैली का ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपने थॉट्स और शेयर कर देना इस वीडियो को. और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड पीस आउट. Bonus!